अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं पियर्स मॉर्गन ने अपने शो में डैन बिल्ज़रियन को बुलाया था। उसका एक इंटरव्यू है, उसके ऊपर रिएक्शन करूँगा। ये इंटरव्यू असल में इंग्लिश में है, तो इंग्लिश ऑडियंस के बीच में इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं। तो इंग्लिश ऑडियंस के बीच में इसमें बहुत हंगामा हो रहा है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जो हमारी उर्दू हिंदी ऑडियंस है, उसके बीच में इसके बारे में कम बात हुई है। तो आज मैं इसके ऊपर रिएक्शन करूँगा और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझेंगे और खुद पियर्स मॉर्गन का सोच क्या है, फ़लस्तीन-इज़राइल का जो पूरा मामला चल रहा है उसको कैसे देखा जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। Has given us many famous kings, none of them quite like Dan Bilzerian, known to millions of people as the king of Instagram. A superstar poker player, he racked up a vast following by documenting his unfettered hedonism, a lifestyle of beautiful women on beautiful yachts and beautiful places. Some say he was Andrew Tate before Andrew Tate, but Dan Bilzerian says that that life is behind him now. The king is dead. He's back with a new outlook, a new agenda, and some very controversial opinions. ओके, तो पियर्स मॉर्गन ने जितनी भी बातें कही हैं, ये एक तरह से डैन बिल्ज़रियन का इंट्रोडक्शन है। उसमें ये बताते हैं कि ये इनका पास्ट क्या था, वो कैसे क्या करते थे, कैसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थे और वो सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद फिर ये इंटरव्यू शुरू करते हैं और ये पहला सवाल पूछते So, Dan Bilzerian, first of all, welcome to Uncensored. I kind of feel if I'd interviewed you 4 years ago, we'd have had a very different interview. You're at the height of your kind of hedonistic Instagram life. There were women everywhere, yachts everywhere, guns everywhere, drugs everywhere. It was a very different lifestyle to the one you have now. So, my first question is. ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। असल में इनकी एक बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस और बहुत अय्याश किस्म की लाइफ़ थी और उन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी, इंस्टाग्राम और वो सारी चीज़ें छोड़ कर के एक नई दुनिया में आ गए। तो एक नई दुनिया में आ गए। तो पियर्स मॉर्गन पूछता है कि ये चीज़ें कैसे हुई? ये चेंज कैसे आया? तो उसके बारे में इन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत फिलॉसफिकल चीज़ है। उन्होंने कहा कि मुझे वो सारी चीज़ों में हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी, तो मैंने जो है अपने आप को ढूँढना शुरू किया। I read that you were at your peak with the women, for example. If you only slept with 2 women a day, you thought that was a disappointing off day. And now you're down to just one woman. That's a pretty dramatic shift in your lifestyle, Dan. Yeah, I mean, it was up to 9 at one day at one point, and it was just, it was a lot. I think a lot of that is probably fueled by insecurity from high school, not getting as many women as I wanted, and like I said, I just kind of took the pleasure seeking to the end of the earth, and with pleasure, I think it's kind of functions like a drug to where you need more to get the same feeling, and then eventually you have to do it to not feel like shit. And so, yeah, I just cut off the hedonism. You even disappeared from Instagram for nearly a year. You only came back in May. Why did you do that? What was going on in your world in that period? Well, I mean, I was writing a book. I think that was a, big focus, and that took a lot of time. And then I was just pretty much over it. I looked at social media like a video game that I beat and that, everybody else wanted to play, and I was just kind of tired of playing. And the only reason I really came back was because I felt like I had this big platform and I really disagreed with what was going on in Israel, that we were funding this genocide. And so I felt like I had an obligation to use my platform to say what I, thought was right. ओके, यहाँ तक जितनी भी बातें हुई हैं वो सब पीछे की बातें थी। अब यहाँ पे उन्होंने बताना शुरू किया है कि मैं सोशल मीडिया पे आया और इज़राइल में जो सोशल मीडिया पे आया और फ़लस्तीन इज़राइल में जो चीज़ें हो रही है वो उनको बहुत प्रॉब्लमैटिक लगती थी, तो उस पर उन्होंने लिखना शुरू किया। तो यहाँ से समझिए कि असल इंटरव्यू शुरू हो रहा है। I'm going to come to Israel because you've said a lot of controversial things about that war. But before we get there, I just want to just explore a little bit more your decision to kind of renounce the king lifestyle. And I think I'm right in saying that you kind of worked out, you can have all the money in the world, but ultimately, if you don't work out what actually makes you happy, you're not going to be happy. Did you work out, other than not leading life to excess, did you work out the little things in life that actually made you happy? Yeah, and I found that most of them didn't require that much money. Surfing, hanging out with my friends, working out, just doing things that I like to do, physically and, playing cards, whatever. Just none of it really required that much money. And I found that I was chasing a lot of these things that didn't really make me happy. And so I just cut it off. How rich are you? Depending on the value of my company on any given day, probably 200 to 300 million.
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, इंसान जो है पैसा कमाना और तमाम जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसके पीछे भाग रहा होता है। लेकिन एक आदमी जिसने राजा जैसी ज़िंदगी जी है और दुनिया की तमाम अय्याशियाँ की हैं, वो ये कह रहा है कि मुझे एक सर्टेन पॉइंट पे समझ में आया कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। आप ज़रूरत है नहीं। आपके आस-पास चंद एक लॉयल लोग हों, अच्छे और मुखलिस लोग हों, ये काफ़ी है। I mean, that's a staggering amount of money, and yet you kind of worked out money doesn't buy you happiness. Does it buy you like security? Is that the best thing about money, that you don't have to worry about money? यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पियर्स मॉर्गन कहता है कि इतना पैसा आपके पास है, लेकिन पैसा आपको हैप्पीनेस ला कर के नहीं देता है। पैसा आपको खुशी नहीं देती है। उन्होंने इसमें अगला सवाल पूछा कि क्या पैसा आपको सिक्योरिटी देती है? क्या आपको किसी चीज़ की श्योरिटी, एक तहफ़्फ़ुज़, एक जो सेंस ऑफ पीस होता है, वो देती है? Yeah, and I think freedom as well. Freedom's a big piece of it. Not having to answer to anybody, being able to say what you believe, and not have to worry about paying bills and those sort of things. I think that's one of the ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के इंडियन मेनस्ट्रीम मीडिया में ये लोग जो झूठ बोलते हैं या मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो बातें करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर ये मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, तो इनका ईएमआई जमा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इनको फंडिंग नहीं होगी या जो भी लोग इनको फंड कर रहे हैं, वो फंडिंग रुक जाएगी। तो ये उस डर से, यानी अपना बिल पे करना है, अपना खर्च बेयर करना है, उस डर से ये सच नहीं बोलते हैं। तो ये डैन बिल्ज़रियन ये कहना चाह रहा है कि आपके पास पैसा हो तो ये श्योरिटी होती है और किसी तरह का टेंशन नहीं होता है। यहाँ पे मेरा एक स्लाइट डिसएग्रीमेंट है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि बेहतरीन जिहाद वो है कि जो जाबिर बादशाह है, जो जाबिर हुक्मरान है, यानी ज़ालिम जो रूलर है, उसके सामने सच बोला जाए। ये देखे बिना कि आपका पैसा रोक देगा या क्या। यहाँ पे तो हमारा अकीदा है कि जो है रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है और हमारा ये तवक्कुल है कि अल्लाह सब कुछ देखेगा। बहरहाल अब ये हमारा आदमी मुसलमान तो नहीं है, तो इसीलिए एग्ज़ैक्टली यही थॉट उसका हो, ये नहीं हो सकता। लेट्स गो। biggest things that money gives you, and like I said, the freedom to do what you want. But as far as like material things, I think you get pretty tired of it pretty quick, and yeah, I just don't really give a shit. I mean, it's a fascinating change in your life. There'll be some skeptics who go, well, he doesn't really mean this. He'll be back doing the other stuff before long. This is just a stunt because he's an Instagram guy. Why wouldn't it be? What do you say to that? Well, I mean, I've pretty much stopped posting on Instagram. I haven't posted much in 4 years. And like I said, I don't really care that much about social media except for, speaking about things that I think the world needs to hear and that a lot of people are scared to say. Well, let's talk about some of that because you've been very vocal. अब यहाँ से इंटरव्यू शुरू हो रहा है। Even when Yahya Sinwar, the head of Hamas, was killed by the IDF, you were out lauding him as a hero. To most people, he's the despicable head of a terrorist organization perpetrated on October the 7th, one of the worst terror attacks in modern history. What's heroic about that? तो पहला सवाल पियर्स मॉर्गन का ये हो रहा है कि यह्या सिनवार को आप हीरो मानते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग जो उसको टेररिस्ट मानते हैं। यहाँ से एक सवाल शुरू हो रहा है। Terrorist organization that perpetrated on October the 7th one of the worst terror attacks in modern history. What's heroic about that? पूछा यह है कि अक्टूबर 7 जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे खतरनाक यानी हीरोइक टेररिस्ट एक्ट है। तो इसमें हीरोइक क्या है? क्योंकि इन्होंने यह्या सिनवार को हीरो लिखा था। अब डैन बिल्ज़रियन का Well, I think when you look at it in a vacuum, it's a very different picture. It's kind of like if I, raped your mother and I kicked you in the nuts 3 times and then you punched me in the face and everybody just wanted to focus on you punching me in the face. I think that would be a very different conversation than when you looked at it, the whole of what happened. And the whole of what happened was Nakba. हमारा आदमी ये कह रहा है कि आप इसको इस तरह से देखें कि एक आदमी है जिसने किसी के माँ को रेप कर दिया, उसको मारता है और उसका बच्चा पलट करके उसके मुंह पे मार दे और पूरी स्टोरी इस बात पे बन जाएगी कि जी बच्चे ने उसके मुंह पे मारा। तो ऐसा नहीं है। पीछे जो तमाम चीज़ें हुई है, उसके माँ का रेप होना या उसको मार दिया जाना, उस सब के बारे में बात होगी। मतलब ये कि जितने लोग अक्टूबर 7 चिल्लाते हैं, उनको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि मामला अक्टूबर 7 से नहीं है, बल्कि पीछे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आगे बताता है। What happened, and the whole of what happened was Nakba. That's where it started. You have 750,000 Palestinians that got displaced. And then you've got multiple, acts of terror, in my opinion, on Israel's side that would make October 7th look like nothing. So to me, I think it was a retaliation, and I think that Hamas is a resistance organization.
and I think that Israel is the terrorist. ओके, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने बताया कि पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जिसमें एक नकबा का ज़िक्र किया और भी कुछ इंसिडेंट के बारे में उन्होंने बस इशारा किया, बताया नहीं है। मतलब ये कि बंदे के पास अपने फैक्ट्स हैं और कहा कि उन सब चीज़ों की बुनियाद पे ऐसा लगता है कि इतना ज़ुल्म हुआ है कि हमास एक रेजिस्टेंस ग्रुप के तौर पे सामने आई है। When did Israel kill 1,200 people in a single day and wound nearly 7,000? ओके, अब पियर्स मॉर्गन की बदमाशी देखिए। पियर्स मॉर्गन ये कह रहा है कि ऐसा कब हुआ कि इज़राइल ने एक दिन में 1200 लोगों को कत्ल किया। यानी अक्टूबर 7 जो है उस दिन एक दिन के अंदर 1200 लोगों का कत्ल हुआ था। तो कह रहा है कि इज़राइल ने कोई एक दिन में 1200 लोगों का कत्ल किया है नहीं। एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अब डैन का आंसर सुनिए। Well, I mean, you have, Nakba, there was, 15,000 people killed during Nakba. I mean, there was Sabra and Shatila. I mean, that was 3,500 civilians. Then you have 2014, they killed 1,500 civilians, 500 plus were kids. I mean, so any one of those days would have been much worse than October 7th, but nobody really talks about those that. didn't happen in a single. यहाँ पे इसने 3 इंसिडेंट का जिक्र किया, जिसमें बताया है कि 1500 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। लेकिन पियर्स मॉर्गन उससे मुतमईन नहीं होता है और सवाल फिर से रिपीट करता है। Well, those didn't What is happen that? in single days, as you know. बोल रहा है कि ये सारी चीज़ एक दिन में नहीं हुआ है। As bad as what they say. Well, those didn't What is happen that? in single days, as you know. Well, I mean, you have, Sabra and Shatila, that was 3,500 people. So that was basically 7 October 7th. And October 7th, I think the numbers get inflated a lot too, because you're not taking into account that it was only 600. ओके, अब यहाँ पे जो डिस्कशन है ये दूसरी तरफ जा रहा है। यानी डैन बिल्जरियन ने कह रहा है कि अक्टूबर 7 को जो हुआ उसमें नंबर ज़्यादा बढ़ा करके बताया गया। यानी अब डिस्कशन नंबर्स पे चला गया है। लेकिन यहाँ पे असल सवाल ये होना चाहिए कि क्या पियर्स मॉर्गन एक दिन अगर 1200 लोग इज़राइल मारेगा तो उसको मानेगा कि जी इज़राइल ने गलत कर दिया, या ये कि अलग-अलग दिन कंटिन्यू पिछले 1 साल से तकरीबन 400 दिन से 45,000 फ़लस्तीनियों का कत्ल कर चुका है। लेकिन पियर्स मॉर्गन तब मानेगा जब एक दिन में 1200 से ज़्यादा लोगों को इज़राइल कत्ल करेगा। ये अपने आप में बदमाशी है। तो सवाल का इस तरह से आंसर किया जा सकता था, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि एक आदमी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस तरह से नहीं है, क्योंकि पियर्स मॉर्गन एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है और बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेटिव है। बहरहाल, अब ये पूरा डिस्कशन नंबर्स की तरफ जा चुका है। Count that it was only 650 civilians, and there was the Hannibal Directive that was employed, and the Hannibal Directive is when the military is basically killing civilians so that they aren't taken as hostages. And that had to be hundreds of people. So I would argue that it was less than 500 civilians that were killed. And to me, that is much less than what the Israelis have been doing to the Palestinians. But you said it's even the year when October 7th happened, they had killed hundreds of Palestinians that year. It was the bloodiest year for kids. So that was a reply to what had been happening. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैंने जो मेरा मेन चैनल है उस पे इसके बारे में बात की है कि यानी अक्टूबर 7 का जो पूरा मामला है उस साल कितना बुरा हुआ था। यानी जो सेटलर अटैक्स है, जो सेटलर टेररिज्म है, उससे जस्ट एक महीने पहले अगस्त में कितना बुरा हुआ है, पूरा मैंने उसके ऊपर डिस्कशन किया है। तो उसके बारे में बता रहा है कि उससे जस्ट पहले वाला जो साल गुजरा है वो फ़लस्तीन और गाज़ा के बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट उन्होंने लाया है। लेकिन पियर्स मॉर्गन को देखिए किस तरह से खेल के होगा। To what had been happening. But when you say that October 7th wasn't as bad as people have said, what do you mean by that? Because from Hamas's own boasting through their GoPro cameras, they mutilated, burned alive, raped and abused, beheaded some people, set fire to homes, they kidnapped babies, they kidnapped Holocaust survivors, grandparents. They did just about every act of depravity it is possible to do. And they didn't just do it, they gleefully posted it on social media and the internet so that we could all watch in real time the horrors that they were perpetrating. It's hard to imagine a more horrific act than what happened that. यहाँ एक चीज़ देखें, यानी ये वो सेम मामला है जब ये अक्टूबर 7 हुआ था उसके अगले दिन इजराइल ने एक सोचा छोड़ा कि जो है 40 बेबीज को डिकेपिटेट कर दिया गया, यानी उनका सर तन से अलग कर दिया गया और तमाम ये झूठ था बिल्कुल। और इस झूठ को इतना सख्त तरीके से फैलाया गया कि उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन अपनी स्पीच में बोलते हैं कि जी 40 बच्चों को जो है डिकेपिटेट कर दिया हमास ने और तमाम सारी चीज़ें, लेकिन बाद में पता चला कि झूठ था, ऐसी एक भी बॉडी नहीं मिली। उसके बाद बाइडन को सॉरी बोलना पड़ा, बाकायदा से प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा अपोलॉजी का।
और ये झूठ साबित हो गया, ना रेप साबित हुआ ना कुछ भी। फिर भी इस खुद आदमी ने जब इसको बाद में काउंटर किया गया तो इसने कहा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, जबकि ये खुद कह रहा है, आज भी यही बात कह रहा है कि जी बच्चों को डिकैपिटेट किया गया। You haven't said on your show 40 decapitated No. babies? I choked up earlier reading this new revelation about 40 babies being killed. Oh my God. And some of them Dan. being beheaded. Happened that day. Why would you try to downplay it? Well, I mean, there was only 2 babies killed from what I was told, and one was in the hospital, and the other one was shot by a bullet. There was no babies in ovens. There was no, beheaded people that I saw. The rapes were disproven. So all that was Israeli propaganda. And the problem is Israel has continued to lie and lie and lie, and they've been caught lying. ओके ये जो लाइज की बात है ये बिल्कुल सही है, यानी जो डिकैपिटेटेड बेबीज की बात हो रही है ये बिल्कुल झूठ था, कुछ नहीं मिला। और हमारे आदमी का भी फैक्ट सही था, इसीलिए इसने बताया कि मैंने 2 ही आदमी के बारे में पढ़ा। रेप्स के बारे में पता चला कि ये बिल्कुल झूठ है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें 15 इजराइल के फैलाए हुए झूठ को एक्सपोज किया था। तो इजराइल ने इतने ज़्यादा लाइज फैलाए और इसमें अनफॉर्चुनेटली इंडिया के जो इजरायली चीयर लीडर्स हैं उन्होंने भी खूब सपोर्ट किया था। और उसके बाद ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि जी एक वहशी लोग हैं जिन्होंने खूब कत्लेआम मचाया है। And they're the only ones that have actually been caught red-handed raping prisoners. And they've done it, and the people that raped the prisoners were now heroes, and they got released, and there was nothing that happened to them. So I think it's very hypocritical to focus on things that they're doing and then try and blame them, on Hamas or the Palestinians. ओके यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी डैन बिल्जरियन सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि हमास के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था कि वो रेप कर रहे हैं वो झूठ साबित हुआ, बल्कि उसने आगे से फैक्ट दिया कि जो इजरायली सोल्जर्स हैं, जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, उन्होंने फ़लस्तीन के जो प्रिजनर्स थे उनके पास, यानी इजराइल के पास जो प्रिजनर्स थे उनको रेप किया था और उन रेपिस्टों को इजराइल ने कोई सज़ा नहीं दी बल्कि उन्हें हीरो के तौर पर देखा गया। अगर डैन बिल्जेरियन एक जर्नलिस्ट होता, एक आर्टिकुलेटिव पर्सन होता, तो वो आगे से पूछता पियर्स मॉर्गन से कि क्या तुम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन इनको पता नहीं है, लेकिन इनके जहन में ये बात नहीं होगी तो बात आगे बढ़ जाती है। बहरहाल Palestinians. It's interesting because it's just, to me, total bullshit. It's just Israeli propaganda. Yeah, I mean, listen, many people will listen to you. अब चूंकि पियर्स मॉर्गन ने एक झूठ बोला और उसको इन्होंने ब्रूटली रिफ्यूट कर दिया, और न सिर्फ ये रिफ्यूट किया बल्कि सवाल किया कि ऐसा तो तुम्हारे यहाँ से हो रहा है, तो बजाय इसके कि ये माना जाए कि ये सही नहीं है या ये सही है, बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि आप जो एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। Listen to you and think that what you're spewing is bullshit propaganda from the other side. And the reason I say that is you say there was no raping or abuse of women, and yet the UN Special Representative on Sexual Violence in Conflict, Pramila Patten, reported in March this year that there was clear and convincing information that Israeli hostages in Gaza experienced sexual violence, including rape, sexualized torture, and cruel, inhumane, and degrading treatment, and reasonable grounds to believe such abuse is ongoing. There was also reasonable grounds to believe that conflict-related sexual violence occurred during the 7th of October attacks in multiple locations across Gaza periphery, including rape and gang rape in at least 3 locations. So when you say it didn't happen, what you're really saying is you think that the United Nations report into all this, which established it absolutely did happen and was horrific, is what? Is a pack of lies? And if so, why would the United Nations lie? Look, I wasn't there, but I have, seen articles that said that it did not happen. So, if it did happen, that's terrible. And I think that's, atrocious. I don't ever believe in rape, but, during, Sabra and Shatia, there was a, girl raped in front of her father. And, that's happened on the other side numerous times. I mean, it happened in the prison. I mean, they were literally rioting because they felt like they had the right to rape these prisoners. So to me, I think it's a bit hypocritical. ओके अब यहाँ पे इन्होंने कहा पहली चीज तो ये समझे कि पियर्स मॉर्गन ने क्वेश्चन को अच्छे से बाइंड करके फिर से ट्रैप करने की कोशिश की। ये नहीं कहा कि मैं ऐसा समझता हूँ या चंद रिपोर्ट्स ऐसे कहते हैं। उसने कहा कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, तो क्या आप यूनाइटेड नेशन को झूठा मानते हैं और आप क्या सोचते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऐसा क्यों करेगी? तो हमारा आदमी इसका जवाब देता है कि मैं वहाँ पे नहीं था, मुझे नहीं मालूम ऐसा हुआ है नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ट्रेबल है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से ऐसा नहीं हुआ है। आगे ये कहते हैं कि
इस तरह के रेप्स इजराइल ने कई मरतबा किया है। उसके बाद उन्होंने बाकायदे से इंसिडेंट्स गिनाए। एक इंसिडेंट गिनाया जहाँ पे बाकायदे से बच्चों के सामने माँ को रेप किया गया है। फिर वही जो प्रिजनर्स वाला है कि इजराइल की आर्मी बाकायदे से प्रोटेस्ट कर रही थी कि जो पैलेस्टाइनियन प्रिजनर्स हैं उनको उन्हें रेप करने का हक है। ये अपने आप में हैवानियत की बात है। I think it's a bit hypocritical. You can't believe that you have the right to rape prisoners and then complain about them raping, your civilians as well. So I don't think it just can only go one way. I think it's atrocious on both sides. You said Hamas are not terrorists, they're an army fighting for their country against the worst terror organization on the planet. And yet Hamas were given power in Gaza in 2005. They were given billions of dollars, a lot of it in a very suspect manner by Benjamin Netanyahu and his government because he wanted to create a rift between Palestinian groups, and I completely accept that. But there's no doubt from what has now emerged that Hamas spent most of that money not on benefiting the lives of Palestinian people in Gaza, but on building an elaborate tunnel system and arming themselves to the teeth so that they could perpetrate this act of horror on October the 7th in a strike against Israel that they hope would decapitate Israel. I'm just curious why you would go out of your way. You say you've read things, but you're a guy of big influence. You've got a big following, 30-odd million people on Instagram. With respect, and I say this respectfully. ये बहुत ज़बरदस्त, देखिए ये कितनी बदमाशी की बात है, इसको आप नोट करिए कि हमारे आदमी ने जब फैक्ट्स दिया, जब बताया कि जो है हमास के लोगों ने रेप नहीं किया है, बल्कि इजराइल के लोगों ने रेप किया है, और फिर ये कि रेप करना ऐसा उनका हक है, इसके लिए प्रोटेस्ट किया, फिर रेपिस्टों को हीरो माना गया। जब ये फैक्ट्स बताया, पियर्स मॉर्गन को ऐसा नहीं कि नहीं मालूम होगा, उसको मालूम है, लेकिन उन सारे फैक्ट्स को स्किप करके ना उसके ऊपर कोई बात की और आगे बढ़ करके एक पूरा दूसरा सवाल लेकर के, दूसरा कॉन्टेक्स्ट लेकर के आता है और कहता है कि हमास जो है 2005 से गाजा में हुकूमत कर रही है, वहाँ उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड मिला था, गाजा के लोगों के फलाह बहबूद का काम ना करके उसने जो है वेपन्स बनाने में उसको इन्वेस्ट किया। और उसके बाद कह रहा है कि आप ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आपका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, 44 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, आप अगर ऐसे बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगा। असल में कहना यह चाह रहा है कि इस तरह की सच्ची बातें अगर आप बोलेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। अब खुद ये फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर पा रहा है, अपनी जो हिपोक्रेसी है, अपनी जो मुनाफकत है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगले को बोल रहा है कि तुम प्लीज सच मत बोलो वरना हम बेइज्जत हो जाएंगे। With respect, and I say this respectfully, I understand why you want to support the Palestinian cause, and I'm sure there'll be many points of agreement we would have on that. But just to say, well, I read somewhere there were no rapes and abuse, it doesn't seem to me like you've really studied, or perhaps don't even want to study, the facts about all this, because it would go against your own narrative. Would that be fair? I mean, look, I got no dog in this fight, Piers. I'm not Palestinian. I'm not Muslim. I'm just saying what I believe is right. And let's just say there was rapes. I mean, I think that's terrible. But like I said, they are, an occupied state and they're operating in apartheid. So when you are kept in an open-air prison, there's going to be resistance, and how that resistance manifests itself is, it's going to be violent eventually. I mean, if you यहाँ पे 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। पहला ये कि ये एक इलीगल ऑक्यूपेशन है और अपार्थाइड के जैसे इजराइल पैलेस्टाइन को ट्रीट कर रहा है, और जब ये दो चीज़ें हैं, यानी इलीगल ऑक्यूपेशन है, अपार्थाइड है, तो इसका रेजिस्टेंस होगा। यानी आदमी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स बोल रहा है, वो पॉइंट्स, वो फैक्ट जिससे सारी बातें क्लियर हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों को डिस्कस ना करके बस उसको ट्रैप करने की कोशिश है। I mean, if you kill enough people and you take enough land and you treat people like second-class citizens, and and you're stealing land in the West Bank, and you're just basically, encroaching these people's human rights on a daily basis, there's going to be repercussions. So, I'm not going to be the judge or jury, and I'm not going to condemn these people for fighting back. I think nobody had an issue with, South African apartheid and their resistance. So I don't know why there's an issue with the resistance in the clear apartheid that's going on here. बहुत इम्पोर्टेंट, यानी ये कह रहे हैं कि जब आप किसी की ज़मीन कब्जा करेंगे, उनके लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, उनको गुलाम की तरह रखेंगे, उनको बेसिक राइट्स नहीं देंगे, उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के जैसे यानी स्लेव के जैसे रखेंगे, तो उसका रिपरकशन होगा, फिर रेजिस्ट करेंगे लोग। और जब साउथ अफ्रीका एक अपार्थाइड स्टेट था, जब वहाँ रेजिस्टेंस हुआ तो लोगों ने उसको सपोर्ट किया। इजराइल जब अपार्थाइड स्टेट की तरह काम कर रहा है और गाजा के लोग जब उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, तो उससे लोगों को प्रॉब्लम क्यों है? और ये बहुत सीधी बातें हैं, लेकिन पियर्स मॉर्गन इन सारी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ेगा और ट्रैप करने की कोशिश करेगा। You went on a Patrick Bet Davis podcast, he's a friend of this show. You said the Jews killed JFK and that Israel wanted October the 7th to happen so that they, Israel,
had a reason to take the land. Let's just discuss those two things. What do you mean the Jews killed JFK? So I believe that that was an Israeli Mossad operation, and they've committed multiple false flag attacks. I mean, they've, the USS Liberty, you've got the Lebanon affair. I mean, so they've got a history of doing this, and I don't think it's crazy to think that they were involved in that assassination, and that's the reason that Trump didn't want to, release those files. And I think clearly it had to be embarrassing. Otherwise, why wouldn't he want to release it? And that's the only thing that I could think of that would be embarrassing, because everybody from that time is pretty much dead by now. So it would make sense. I mean, they wanted to cut off, it's now AIPAC, but the Zionist, organization that was doing all the funding that should have been registered as a foreign entity. And, he wanted to register them under FARA. He wanted to, take away their ability to have nukes. And, they didn't like that. So I believe that they killed JFK. But just to be clear, I mean, you have absolutely no evidence that any Jews killed JFK, do you? Nothing. Well, I mean, that's not true. I mean, Jack Rubenstein, that was the person that killed the supposed Patsy Lee Harvey Oswald. I mean, he was a Jewish mob guy. And, there's been numerous documentaries tying the, Jewish mafia, the CIA. I mean, I wasn't there, but everything that I've seen evidence-wise points to Israel. Really? And, they're doing it in Epstein Island. They did it in Epstein Island. I mean, Yeah, but here's the problem I have with this. You say everything you've seen, right? It just seems to me like you see a lot of conspiracy theory stuff. I've read a lot about the JFK assassination. There is zero evidence that any Jews killed John F. Kennedy. Zero. Unless you want to go off into some mad conspiracy theory rabbit hole. And I say to you that you make these big statements and you have a huge following of people, many of whom will think, well, wow, if Dan Bilzerian says it, maybe it's true. And that way, I would argue, this is how a lot of conspiracy theory stuff in the end gets propagated and promoted to the detriment of society. Because people like you who are very smart, there's no question of that, and very successful, and made a lot of money being very successful, I'm just curious why you want to be so inflammatory without actually having any evidence. And as you say, to just sit back and say, well, I wasn't there. Well, I wasn't there. Obviously, I wasn't even born. But I know that there were there's no credible evidence that Jewish people killed JFK. And yet you just say it as a fact, as if somehow we should just believe this. No, I didn't say it as a fact. I said that's what I believe. And if you look at, the history of people that have criticized Israel, Gaddafi, Saddam Hussein, JFK, Nixon, I mean, they all have similar fates. And ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी ये कि डैन बिल्जेरियन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जेएफ कैनेडी को ज्यूज ने मरवाया था। तो उस पे पियर्स मॉर्गन कहता है कि एक सिंगल एविडेंस नहीं है, तुम ये जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के जरिए कैसे कह सकते हो। तो उस पे डैन बिल्जेरियन आंसर करता है कि वो सारे लोग जिन्होंने भी इजराइल के खिलाफ बात की, उस सबको किसी न किसी तरह से मार दिया गया, या ये कि सबका एंड ऐसा ही हुआ, जैसे गद्दाफी का नाम लिया, सद्दाम का नाम लिया, उसके बाद जेएफ कैनेडी है और भी लोगों का। तो कह रहे हैं कि इसमें एक सिमिलरिटी ये है कि ये लोग एंटी इजराइल थे, इसीलिए ये मारे गए। खैर आगे और सुनिए। They all have similar fates, and so I don't think that's a coincidence. I also think that today a lot of, quote unquote conspiracy theories have all come true. So, about ये बहुत जबरदस्त बात है, यानी पियर्स मॉर्गन ने इनके वो क्लेम जिसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करके रिजेक्ट करने की कोशिश की, उसको कहा कि वो पुरानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिसको पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करके साइड कर दिया जाता था, वो सब अब धीरे-धीरे सही साबित हो रहा है। About 2-3 years ago, being a conspiracy theorist, you were a nut job, wacko, whatever, and now it's just like every single one of them seems to be coming true, coming to fruition. So I don't know. I mean, I think once you see the government lie to you and lie to you on a scale like they did during COVID, you start questioning a lot of things. And I think it's healthy to question things. And I think one of the big reasons why I've marched down this path so far is because once I started questioning Israel and once I started speaking out against Israel, I saw the ramifications and I saw the pushback. And the side of right is usually never the side that's silencing people. The people that are on the right side of history are not the ones trying to, cut off free speech or punish people for what they say. You think the Jews killed Gaddafi as well? Israel. I think that they have way too much control in our government. And I think it is not coincidence that everybody that's been critical of Israel has, either been overthrown, Shah of Iran, like every single person that's been critical of Israel has either been killed or thrown out of power. And I don't think that that is
a coincidence. I mean, the reason we fought a lot of these wars is because of Israel. I mean, Israel lied to us. They told us that there was weapons of mass destruction. यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो लोग जिन्होंने भी इज़राइल के खिलाफ बात की, उस सबको हटा दिया गया या मार दिया गया या उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बाइडेन का जो ज्यूस लॉबी है अमेरिका के अंदर, उससे कैसे ताल्लुकात हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बाकायदा से बात की है कि कैसे ज्यूस लॉबी इतना प्रेशर बनाती है या इतना कंट्रोल करती है, इतना इन्फ्लुएंस करती है कि जिसकी वजह से ये लोग समझिए कि आंख बंद करके इजराइल को, आईडीएफ को सपोर्ट करते हैं। अब आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, यानी इराक वॉर। There was weapons of mass destruction. We fought many wars on their behalf, so their influence cannot be, disputed. And the people that we continuously fight just happen to be their natural enemies, and they have influence on what we do. And that's my biggest issue. That's actually one of the reasons why I kind of started marching down this path, is because I see how much control Israel has over our government, and it's not healthy. And I see our politicians acting on behalf of Israel instead of on behalf of what is best for the United States. And that is, as a veteran, where I really have fucking, huge problems with this. I'm sure you do, but when you say that what was it you said? That Jewish people said there were weapons of mass destruction. I mean, it was President Bush. He's not Jewish. It was Colin Powell. He wasn't Jewish, as far as I'm aware. What are you talking about? What do you mean? Well, I mean, you're talking about 0.2% of the population. So obviously every single person in there is not Jewish, but it is benefiting Jewish interests, and we are operating on behalf of Israel. That's what I'm saying. I'm not saying all of our politicians are Jewish, obviously, but what I am saying is that Israel has dirt and blackmail on our politicians. That's the only way to explain why they put the interests of Israel above our countries. And you see that. I mean, look, I truly believe that Epstein Island was a Mossad operation, and they have dirt on our politicians, and they've done plenty of these, and that is why they control our country. I mean, explain it out. Why else would our country be doing everything in Israel's benefit to our own detriment? Israel doesn't do anything for us. Why would we be doing that? But we know why America, and the UK for that matter, Tony Blair, because I spoke to him about it at length at the time, we know why they went to war with Saddam Hussein in 2003. They went because they believed he had weapons of mass destruction. They were the ones who argued it. None of the senior people that argued it for America or the UK, in terms of Tony Blair, George Bush, Colin Powell, were Jewish. This idea that somehow Israel was orchestrating that war, I think, is completely nonsensical. I mean, my brother fought in that war for the British Army. He wasn't ordered into that war by Israel. इतनी वाहियात बात है कि ये कह रहा है कि मतलब ब्रिटिश और अमेरिका ने जो जाकर के इराक में जंग लड़ी है, उसमें ज्यूज का कोई हाथ नहीं था, कोई रोल नहीं था। मैं कह रहा कि मेरा खुद का भाई जो है, यानी ये ब्रिटेन का है, तो इसका खुद का भाई जाकर के इराक में लड़ा है और उसको किसी ज्यूज ने ऑर्डर नहीं दिया। यानी कि इसी तरीके से सपोज करिए कि यानी ऑनर है, उसने दिल्ली में बैठ करके एक ऑर्डर दिया है कि जी बिहार में कुछ लोग हैं, उसको ये काम करना है। बिहार में जो उसका मैनेजर है वो ऑर्डर कर रहा होगा ना कि इसको ऐसे करो वैसे करो। अब कोई बोले कि जी मुझे तो मेरे मैनेजर ने ऑर्डर किया था, दिल्ली वाले से मुझे क्या मतलब। तो ये नॉनसेंसिकल सवाल है। बहरहाल वो अलग घुमा करके लिया जा रहा है। It was a decision taken by George Bush and Tony Blair. It just seems to me that when people have accused you, if they have, of being anti-Semitic, this is the reason why. Is because you look everywhere for a reason to blame Israel for absolutely everything, even when there's no evidence that it was Israel involved in the actual orders that were taken. अब देखिए यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है। यानी एक आदमी फैक्ट्स दे रहा है, एक आदमी लॉजिक दे रहा है, एक आदमी एक्सप्लेन कर रहा है, वो सारी चीज़ों को हटा करके अपनी कॉन्स्पिरेसी शुरू कर रहे हैं। और वो कॉन्स्पिरेसी है कि जी आप ज्यूज़ के अगेंस्ट हैं, एंटी सेमेटिक हैं। यानी अगर आप ज्यूज़ के खिलाफ कोई बात कहते हैं तो वो एंटी सेमेटिक हो जाता है। जबकि शुरू से ये आदमी बता रहा है कि ऑक्यूपेशन है, सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, अपार्थाइड स्टेट है, रेजिस्टेंस होगा, रिपरकशन होगा। आईडीएफ के लोग, इजराइल के लोग राइट समझते हैं रेप करना, उसके लिए राइट कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो रेप कर रहे हैं उनको हीरो समझ रहे हैं। वो सारा पूरा फैक्ट्स दिया। उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें बताई, लेकिन वो सब साइड हो गया। और सिर्फ इसलिए कि जी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो अपनी एक कॉन्स्पिरेसी बनाई कि जी आप एंटीसेमेटिक हैं। Israel involved in the actual orders that were taken. There is no evidence that Israel ordered the Iraq war. It was taken by George Bush's administration with the help of people like Tony Blair. Well,
went there because Netanyahu testified in front of Congress that they had weapons of mass destruction, which was a total lie, and it was a lie to benefit Israel because that was an enemy of Israel. So what I'm saying is they're the beneficiary of what we ये तो इन्होंने कह दिया कि नेतन्याहू ने कांग्रेस के सामने ये टेस्टिफाई किया था, ये बाकायदा से कहा था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अगर ये ना भी कहता तब भी ये बात समझ में आती है कि इराक का उस पूरे रीजन में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, या इराक से सबसे ज्यादा किसको प्रॉब्लम है, या इराक उससे पहले किन लोगों पे अटैक कर रहा था, ये सबको समझ में What I'm saying is they're the beneficiary of what we are doing, and it's not in the best interest of the United States. So clearly they've got control over our politicians. Yeah, but to be clear again, though, I'm not saying our politicians are Jewish. I'm saying our politicians are doing what they're telling them to do. Right. Well, that's slightly different to what you did say. When you said on Patrick Bet-David's podcast as well, they play the victim card so effing much about Jewish people. I mean, do you not understand why Jewish people might feel a sense of victimhood, given that 6 million of them were killed in World War II by a genocidal monster in the Holocaust? Do you not understand why that might make Jewish people feel that, yes, they have indeed been victims? Yeah, I mean, that figure's been revised, but, you know, I believe that Jewish supremacy is the greatest threat to America, and I think it's the greatest threat to the world today. I truly believe that. What do you mean the figure's been revised? What do you mean? Well, they said that it was 4 million that died in Auschwitz, and then they said it was down to 1 million, so they've revised the figure. Well, how many people? And How many people do you think were killed in the Holocaust? 271,000 that died in Auschwitz. How many do you think were killed in the Holocaust? I don't know, but I would bet my entire net worth that it was under 6 million. Again, I simply ask you, Dan, what's the motivation for making claims like that? यहाँ पे एक बात देखें, इन्होंने ये बात कही कि जो हॉलोकॉस्ट हुआ उसमें 6 मिलियन लोग नहीं मारे गए थे, यानी 6 मिलियन का जो नंबर दिया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है। इन्होंने कई मरतबा रिवाइज करके उस नंबर को कम कर दिया है। पियर्स मॉर्गन कह रहे हैं कि आपको ये बात कैसे पता चली, आप कितना नंबर समझते? उन्होंने कहा कि मेरी जो पूरी प्रॉपर्टी है मैं उसको बेट कर सकता हूँ, यानी शर्त लगा सकता हूँ कि ये 6 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। अब ये कि पियर्स मॉर्गन कह रहे हैं कि आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, यानी इसके ऊपर सवाल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी स्टडी है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस पे बात की है कि जी ये नंबर गलत है, साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश की है, डेटा बताया है कि हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ या ये कि इतना नंबर नहीं है और वो सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर आप ये कह दें तो आप एंटीसेमेटिक हैं। Claims like that. What do you stand to gain by trying to diminish what happened in World War II? I'm just answering your question. I mean, I'm a gambler, so if I think that, something is a low probability, then I would bet on it. And I don't know for a fact, but the evidence all says that it was less than 6 million. I mean, just the mathematics don't work. Like, you can't cremate that many bodies. Like, the whole, gas chamber thing, it's a very ineffective way to kill people. So when people have researched this and they've done the due diligence, they said it's mathematically impossible. You see, I'm sorry, but I just find that unbelievably offensive. And I'm not even Jewish. Again, there is clear evidence that 6 million people, almost predominantly Jewish, were killed in the Holocaust. 12 million were killed by the Nazis in total. They were a genocidal monstrosity of the Nazis who wanted to eliminate the Jewish people. And they tried extremely hard to do that. You said 12 million were killed? The Nazis killed 12 million people in World War II. 6 million were killed in You said 12? 6 million were killed in the Holocaust. Or do you not believe that either? Okay. I mean, Jews have killed far more Christians. Well, Jews have killed far more. Let's just accept the 6 million figure. Jews have killed far more Christians than that. अब यहाँ से एक नई बात शुरू हो रही है। वो ये है कि ये कह रहे हैं कि चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 6 मिलियन ज्यूज हॉलोकॉस्ट में मारे गए थे, लेकिन दूसरा साइड का हिस्ट्री देखें। More Christians than that. I mean, it's not even close. If you look at the Bolshevik genocide, you look at the Holodomor, I mean, they've killed way more Christians. I mean, they basically invented the genocide. So, they deny the Armenian genocide. Israel denies that. They've lobbied the U.S. to deny that. I'm Armenian. They killed half of my people. So, and I'm not offended by that. If somebody questions that, it's not some crazy thing. I mean, Israel denies the Armenian Holocaust. Okay. It sounds to me, Dan, like you do actually hate Jewish people. No, I believe that Jewish supremacy is the greatest threat to the world today. I look at what they're doing in the media. They're pushing this transgender nonsense. I mean, and they did it in Germany. The first transgender clinic was opened by a Jewish guy.
And I don't like this perversion pushed on our children. I don't like the fact that 9-year-olds are reading about homosexual acts. I don't like that drag queens are reading them in schools. I don't like that Kamala Harris wants to pay for sex changes in prison so that men can turn into women and women can turn into men. And I don't like the fact that he's putting in, men into women's prisons, male rapists into women's prisons because they identify as women. I mean, it's just nonsense. I don't like, men beating up women in boxing and sports. I think it's all nonsense. And I think it's leading to a degradation of moral fiber. And if left unchecked, I think it's going to ruin the world. But again, you're blaming Jewish people. Why? Because they're pushing this. What do you mean they're pushing it? What are you talking about? Well, I mean, they're controlling the media. I mean, the DEI is being pushed by BlackRock. BlackRock's execs are all Jewish. You look at where this is coming from. It's not a surprise. Dan, all the Disney execs are Jewish. Dan, they're pushing it on children. Right. Do you accept, Dan, that you are just blatantly anti-Semitic? वेल यहाँ पे देखें, मैंने एक वीडियो बनाई थी पोर्नोग्राफी के रूट के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, किन किन लोगों ने इसको इन्वेंट किया था, इसके बिजनेसमैन कौन लोग हैं, वो सारी चीज़ें। और आपको हैरानी होगी जान करके कि इसमें ज़्यादातर जो लोग थे, जो लोगों ने शुरू किया था, वो सब के सब ज्यूज थे। That you are just blatantly anti-Semitic. Look, I have an issue with that term. I mean, I think the real Semites are the Palestinians. I mean, the DNA tests that they've done on the Israelis that are living over there, they're Eastern European Ashkenazi Jews. I don't even think they're. यानी जब ये क्लेम लगाया जा रहा है, यानी ये कि जब ये सारी बातें हुई हैं, बजाय उसको भी रिफ्यूट किया जाए, उस पर एक डिसेंट डिस्कशन हो, ये सारी चीज़ें छोड़ करके पियर्स मॉर्गन ये कहता है कि तुम एंटी सेमिटिक हो, तो कहते हैं मुझे इस टर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल समाइक जो हैं वो फलस्तीनियंस हैं, और ये जो जितने इजरायली आपको नजर आ रहे हैं, ये सब ईस्टर्न यूरोप के अश्केनाजी ज्यूज हैं। Ashkenazi Jews. I don't even think they're actual Semites. They don't have ancient Hebrew DNA, which is why DNA testing is illegal in Israel. I mean, you're literally denying their existence now. I mean, you are just a brazen anti-Semite, aren't you? You hate Jewish people, you hate Israel, you hate the state of Israel, its government, everything about it. You're blaming them you blame them in this interview for literally absolutely everything. When you say, well, I think most of the problems today is caused by Jewish supremacy. I believe that. I'm honestly gobsmacked that you would say all this publicly, given what a high profile you have. Yeah, I mean, it is not it's not a popular opinion for somebody that cares about money and cares about not being canceled. I mean, that's the problem. Is you can say whatever you want against Muslims. You can be super anti-Muslim. You can talk about them and nobody cares. But if you say anything about Jewish people, you get canceled. They, look what they did to Kanye. I mean, so why are they such a protected class? Let me ask you that. I don't think they are. I think they're a class that get targeted by people like you. And ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यानी ये कह रहा है कि आप मुसलमानों के खिलाफ जितना चाहे जो चाहे बोल सकते हैं, जितनी गंदगी जितना जहर चाहे फैला सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। आप स्वीडन में देखें, नॉर्वे में देखें, मुसलमानों के कुरान को जलाया जा रहा है, कार्टून बनाया जा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तमाम तरह की बदमाशियाँ हो रही हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आपने एक लफ्ज़ ज्यूज़ के खिलाफ बोल दिया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू हैव ऑल द फैक्ट्स, आपको एंटी-सेमिटिक कहा जाएगा। People like you, and indeed by Kanye, who spewed horrible anti-Semitic nonsense. But yours seems to me to be more insidious, because you're literally blaming. So you think that Kanye with respect, targeted let me them finish. and not the other way around? You're literally blaming Jewish people for almost everything that's happened that you don't like in the world. That is the purest personification of anti-Semitism right there. That's what it is. Well, when you have a religion that promotes supremacy, when you have a religion that says that you are better than other people, and when you have a religion that says it's okay to steal from other people as long as they're not Jewish, when you have a religion that says it's okay to rape people that aren't Jewish, when you have a religion that talks about having sex with, kids that are under 3 years old, when you have a religion that promotes these things and promotes supremacy, I think you're going to have problems. And you see that in Israel. Israel is a manifestation of that religion. And I think that religion is, it's terrible. I don't believe in white supremacy. I don't believe in Jewish supremacy. I don't believe in supremacy at all. And right now, I think you have massive Jewish supremacy. You sound like a Nazi. देखिए, इसने बहुत लॉजिकल बातें कही हैं, और बाज़ाब्ता से तालमुद के अंदर, यानी ज्यूज़ का जो रिलीजियस टेक्स्ट है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद है।
होना ये चाहिए था कि डैन बिल्जेरियन उनसे पूछता है कि क्या तुम इन बातों को डिनाई करते हो? क्या तुम ये मानते हो कि ज्यूस इसको नहीं मानते हैं? वो सब ना करके, क्योंकि डैन बिल्जेरियन कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है, इसीलिए वो ट्रैप नहीं कर सकता है। तो अगर ये पूछता है कि क्या तुम इन बातों को मानते हो और क्या तुमको ये टेक्स्ट नहीं लगता है कि ये सुप्रीमेसी को प्रमोट करता है, वहीं सारी बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसने वो सारे फैक्ट्स दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, बजाय इसके कि इन चीज़ों को डिस्कस किया जाए, वो सारी चीज़ों को हटा करके पीएस मॉर्गन कह रहा है कि आप मुझे एंटीसेमिटिक You साउंड कर sound रहे like हो। a Nazi. I mean, why do you say that? That's literally what Nazis would have said in World War II. They would have literally articulated their hatred of Jewish people and the reasons why in exactly the way you've just done. I don't have a hatred for Jewish people. You do. I don't like a religion that says that they're better than other people. And what's that? Well, you do. You obviously do. It's blatant. No one watching this will draw any other conclusion. I'm staggered about how brazen you've been. Well, yeah. I mean, I don't like it when people think they're better than other people. And you see that in Israel, and they're acting like that, and they're treating Palestinians like second-class citizens. They're treating them like subhuman beasts, and it sells that in their Talmud. So it says if you are not a Jew, that you are. ये बहुत यानी फैक्चुअल बात है, यानी ये चीज़ वहाँ पे हो रही है। अब अगर पियर्स मॉर्गन अंधा है या फिर ईमान यानी अपना ज़मीर बेच चुका है तो अलग बात है। ये सारी बातें आज इजराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, जहाँ फ़लस्तीनियों को सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है, उनको बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते हैं, उनको ठुड्डे मारे जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि क्रिश्चियंस औरतों को मारा जाता है, उनको थूका जाता है, बच्चे इस तरह की बदतमीजियाँ कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये जो इनको मोटिवेशन मिल रहा है वो वहीं से तो मिल रहा है जहाँ के बारे में ये कह रहा है। तो बजाय इसके कि उन फैक्ट्स को क्वेश्चन किया जाता, उन चीज़ों को डिस्कशन में लाया जाता, वो सारी चीज़ें हटा करके पीएस मॉर्गन कह रहा है कि तुम तो बस जिहाद फैला रहे हो। और ये बातें जब कोई किसी मुसलमान के खिलाफ बोलता है इसी के शो के अंदर, तो ये नहीं बोलता है। Basically subhuman. And I don't think that Judaism and Christianity go hand in hand. I mean, they believe that Jesus is in hell burning in human shit, and they believe the Virgin Mary is a whore. So I don't think those are two religions that really intersect very well. But, you know, we've been programmed that they do. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हमारा अक़ीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और मरियम अलैहिस्सलाम की जो पाकीज़गी है वो वैसे ही रही। लेकिन यहूदी ये मानते हैं कि माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम एक बदकिरदार खातून थी और ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जहन्नम में है, इस तरह से ये उनके यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ये तो बजाय इसके कि इन बातों को, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, डैन बिल्जेरियन को अगर ये बात पता होती यानी जर्नलिस्टिक बिहेवियर होता उसका, तो पूछता कि डू यू कंडेम दिस, जैसे वो पूछता है कि डू यू कंडेम हमारा, तो पूछता कि डू यू सपोर्ट और कंडेम, वही ये फंस जाता है। लेकिन वो इस तरह से ना बोल करके हमारा आदमी बिंदास स्ट्रेट अपनी बातें करता गया। Programmed that they do, and we've been programmed that it's okay and that Jews are the chosen people, and I just disagree with that. I think everybody's equal. Do you even comprehend how this interview is going to play out when it airs? Yeah, I'm sure it'll be bad. But, you know, my opinion is not politically correct, but I believe that is the truth. You're living in Qatar now. अब लोकेशन चाहिए हमारे आदमी को, क्यों? क्योंकि लोगों को पता चले ना, जलील करना है। Well, that's where I'm at right now. I'm not living here, but visiting. Well, is it the case that you feel safer to spew this kind of stuff from Qatar than you would spewing it in the United States? Well, I mean, I've had a lot of Jewish people attack me since I started standing up in support of Palestine. When I started saying things that were against Israel, I found that I had my Jewish business manager tried to extort me. I had lawyers do things that were illegal, and you know, I found a lot of, you know, just hatred from the Jewish community because I was speaking out against the genocide, and that really opened my eyes to what's going on. You know why Jewish Like I people? said, rarely is it the case that people on the right side of history are the ones that are trying to silence people. Yeah, the reason Jewish people may dislike you is because of your obvious hatred for them and everything they stand for. I mean, you've literally spent the last 20 minutes on an anti-Semitic rant that makes Kanye look like a choir boy. And I'm staggered, but also bemused as to what you think you'll gain from this, other than... कितनी वो है, हिपोक्रेटिकल बात है ये कि जब कोई इसी के शो में आकर के मुसलमानों के खिलाफ बेइंतहा नफरत की बातें करता है, ये उसको बोलने देता है,
तब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अभी इसको लग रहा है कि जी मेरा तो दिमाग उड़ गया और आपने ऐसी बातें कर दी। As to what you think you'll gain from this, other than you're just laying bare your anti-Semitism for everyone to see. I don't think I'm going to gain anything. I think, yeah, I think it'll be horrible for me. But you know, it's what I believe. I don't think that Jews like Christians, and you see it when they killed them during the the Holodomor, the Bolshevik genocide. I mean, the Bolsheviks, the leadership was 84% Jewish, and they were just mass killing Christians, and nobody talks about that. Let me just ask you That one was more the first time. Holocaust. Let me just ask you Nobody one more wants to time, talk to about be that. honest. History But- books don't cover that. Right, let me just ask you one more time, just for clarity. And I think you should be honest. But do you hate Jewish people? No, I don't. Then why do you spew such hatred about them? ये सारी facts हैं, इसमें head Well, नहीं I don't होगा। like what they've done. I don't like what their religion preaches. I don't like what's going on in Israel. I don't like their influence over our government. So, 4 fact दिए you हैं। know. What do you like about Jewish people? I mean, I would say on average they're more intelligent. That's it? I mean, I don't have too many. I mean, look, there's 2 billion Muslims, but everybody wants to, promote this anti-Muslim, this hatred for Muslim, like they're all, these terrorists. And I think the Israelis are the terrorists. I think they are the ones perpetuating the big acts of terrorism. And, nobody wants to talk about that. What do you say to... ये सही बात है, यानी वो कह रहा है कि 2 बिलियन मुसलमान हैं, उनके खिलाफ तमाम नफरत फैलाई जाती है, उनको टेररिस्ट बताया जाता है, सारी दुनिया की सारी बुराइयां की जाती है, कहता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, लेकिन कह रहा है I believe that the real terrorist is Israel. And what do you say to Jewish people who may watch this and be utterly horrified by what they're hearing? They can be horrified. I mean, I was horrified to find that they mass murdered Christians. I was horrified to learn the things that they teach in the Talmud. I was horrified that they think that Jesus is burning in shit in hell. I was horrified that they think that the Virgin Mary is a whore. I was horrified to learn that they think it's okay to steal from Gentiles. I was horrified to hear that there's, 2 sets of justice. I was horrified to find out that they think it's okay to, gang rape Palestinian prisoners. I was horrified about all those things. I'm horrified that we're funding a genocide right now. So they can be horrified. देखिए सिंपल सी बात है, खाली फैक्ट्स बताया उसने तालमुद के बारे में कि कैसे आप जो नॉन ज्यूस है उसका सामान लूट सकते हैं, 3 साल की बच्ची से शादी अलाउ हो सकता है, उसी के बाद ये कि पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर्स हैं उनका गैंग रेप किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें बताई। वो सारी चीज़ों को पियर्स मॉर्गन ने डिस्कशन में नहीं लिया और कहा कि जी आप एंटी सेमेटिक हैं, और सही से इसको वेल विश भी नहीं किया। Dan Bilzerian. कहने को तो ये अनसेंसर्ड है, लेकिन देखने से लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कटिंग की गई है, और अगर आप इसका कमेंट जाकर के चेक करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक बनाया है। ये इंटरव्यू पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे एकदम वायरल है, लोग खूब अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मैं भी समझता हूँ कि डैन बिल्जेरियन जैसा आदमी होना चाहिए जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, सुने और जो बिलीव करता है वो बोलता चला जाए। और अच्छी बात ये है कि उसके अपने फैक्ट्स हैं, उसने पढ़ा हुआ है, वो कॉन्टेक्स्ट जानता है, उसने स्टडी की है, वो सारी चीज़ें बताता गया। बस एक फ़र्क था, और वो ये है कि वो जर्नलिस्ट नहीं है, इसीलिए वो ट्रैप नहीं किया। वरना अगर पहले एक सवाल पूछ लेता कि क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि जो IDF के सोल्जर्स हैं वो फ़लस्तीनियन जो प्रिजनर्स हैं उनका रेप करें, इसको सपोर्ट करते हैं, वही सारी बात ख़त्म हो जाती। लेकिन खैर, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।